तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टरमैन्स। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो रिसेंटली भी बहुत ही कंट्रोवर्सी में है, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज है। स्टेट और सेंटर के रिलेशन बीच में, जो फेडरल रिलेशन है उसके बीच में, एंड द टॉपिक इज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। सो द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को आज हम लोग अच्छे से देखेंगे और क्या क्या इसके सारे पहलू हैं वो देखेंगे हम, और एक ब्रॉड एनालिसिस करेंगे जैसे गवर्नेशनल पावर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ असेंट। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक, दैट इज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। सो द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रेसिडेंशियल क्राइसिस। ये क्राइसिस हुआ क्यों? तो हमने अभी देखा कि तमिलनाडु वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टेट्स जो थे, खास करके तमिलनाडु जो थे, उसके बहुत सारे केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। सॉरी, नॉट द केसेस, बहुत सारे जो बिल थे जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था और जो गवर्नर के पास पेंडिंग थे, और गवर्नर उसको बहुत दिनों से होल्ड पर रखे हुए थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गवर्नर का जो पावर है उसको लेकर के, स्पेशली आर्टिकल 200 एंड 201। तो इसमें क्या था कि जो तमिलनाडु के बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, मतलब उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए या फिर पॉकेट वीटो यूज करके गवर्नर अपने पास रखे हुए थे, और सेम सिचुएशन वाज देयर विद द केरला एंड इट वाज सिमिलर सिचुएशन विद द पंजाब आल्सो। सो दिस लेड टू द controversy and there was a conflict between the central state and the federal case which went to the Supreme Court. And Supreme Court, as we all know, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका ये था कि कैसे इसको डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाए और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। सो इन अर्ली 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ जो था, जो इमर्ज हुआ बिटवीन द स्टेट्स, एंड जो चैलेंज किया गवर्नर का जो अथॉरिटी है टू असेंड द बिल फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने, या प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने 16 रेफरेंस पूछे थे प्रेसिडेंट से अंडर आर्टिकल 143, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस था। सो विल सी वन बाय वन। सो आर्टिकल 143 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 143 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं रेफरेंस, और ये दो आर्टिकल के अंदर होता है। तो वह आर्टिकल 142, आर्टिकल 143(1) एंड आर्टिकल 143(2). तो इसमें यह बोला गया कि प्रेसिडेंट जो थे, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो रेफर करते हैं क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशरी है उनको, और उनसे ओपिनियन, एडवाइजरी ओपिनियन ले जाता है अंडर आर्टिकल 143। और आर्टिकल 143 के दो क्लॉज होते हैं। तो इसमें क्या मैकेनिज्म क्या है कि एक कंसल्टेटिव ब्रिज अलाउइंग द एग्जीक्यूटिव टू टैप इनटू जुडिशियल विजडम टू रिजॉल्व एम्बिग्विटीज बिफोर दे एस्केलेट इनटू लिटिगेशन। सो लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है, एंड दैट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग आल्सो, like in section 213 of Government of India 1935, that also says the same thing, that the Supreme Court, at that time it was the federal court, can ask Governor General can ask the question to the Supreme Court. And the philosophy was judiciary acts not as an arbiter but as a safety valve for federal friction. So now we see, as already I have told, that there are two articles, article 143A and article 143(2). So in article 143(1) what it says, the scope of law and fact of public importance। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। And the president's discretionary है, as it is already mentioned here, like president is having discretionary, he may refer to the matter, he may not refer to the matter. At the same time, the court is also having discretionary to give the report or to not give the report, and it is broadly
constitutional classifications. Okay. At the same time, in Article 142, 43, 2 section, it says it is when there is a matter of pre-constitutional treaties or the covenants. So in that case, the president can have discretionary power to ask the reference, but the Supreme Court is having mandate to give the reference. It shall give the reference. It cannot say that I cannot give the reference, as it was there in the case of Article 143(1). And it is basically legacy issues from princely states which was not there in the constitution. तो उसको उस deadlock को resolve करने के लिए ये था. So the keynote is that article. So the keynote is 2025 reference जो है वो fall करता है under article 143. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है और ये डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए है यूनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट के बीच में. So now we'll see the next, that how it has evolved from 1951 to 2025, how it has evolved. So the first case what was come under the Supreme Court was the Delhi law of case, where it says limits of delegated legislature, and the second was the Berubari case. In that, the president has asked presidential reference to clarify that what exactly means. So the territory cessation requires amendment. The Supreme Court has clearly mentioned if you want to seize the territory or give territory to anyone, which needs a constitutional amendment. And without that, you cannot give the territory. So this was the thing which clearly Supreme Court has stated. Even in the third judge cases, also this president has asked for the presidential reference, and the Supreme Court has stated that it means that there's consent of the Chief Justice of India, and Chief Justice of India will consult with the 4 senior most judges of the Supreme Court. And similarly, it was the case with the natural resources there in 2012, and now the 2025, that is the 16th presidential reference related to the governational timeline and rejected deemed deceit. So now we'll see the mechanics of assent. So Article 200 and 201 we'll see. So what Article 200 says, that Article 200, governor is having 4 power, and what all powers are there? First, it can grant assent. दूसरा है कि it can withhold. Third is it can return, and the fourth is it can reserve for the president. So now, as the governor gives assent, so it becomes a law, and when the governor holds it, then the bill dies, and subsequently when the bill is returned to the legislative assembly, and there is a provision that if the legislative assembly passes the bill with or without amendment, that the governor has to give the assent, and that is mandatory. And the fourth option, that is that if it is reserved for the president, then it will go to the president, and president is having no bound about that. It may or may not give the assent, and that comes under Article 201. That is the role of president in giving the assent. It can give assent, it can withhold, and it can return. Even if the president returns the bill for the consideration, and with or without the amendment, if the state legislature passes it, then there is no obligation to the president to give the assent again. So president may or may not give the assent, but once the governor it withholds, and if it returns the bill to the consideration, and if it is passed by the legislative assembly, then the governor has to give assent, as it was there in the case of this one. So in this, the keynote is, unlike the governor, the president is not bound to give assent to the bill is returned and again passed by the legislative assembly. Now coming to the next, there is the flashpoint, the April 2025 issue. So the lawsuit which was filed by the Tamil Nadu government against the Union of India, and a two-judge bench intervened in this delay. The controversial ruling was the bench imposed a strict timeline. A strict timeline was imposed by the bench, and it said that it will be deemed assent if the governor holds the bridge for long period. That if the governor does nothing,
it counts as yes. So that is the meaning of deemed assent. The reaction was the center viewed this as an judicial overreach, which judiciary has done a number of times against the rewritten constitution, and the government used article 143 for the presidential reference and for the constitutional remedy, and it has been given to the larger bench. Now the problem of the constitutional silence, where the constitution is silent in this, why this issue a deadlock is coming. So the text itself says that article 200 says as soon as possible, means there is no strict timeline mentioned in that regarding the return of the bill. So as soon as possible means it can be 1 day, 2 day, 1 month, 2 months also. So there is an ambiguity, subjectivity in that. And the second is that there is ambiguity, that it does not specify a specific number of days, as already we have discussed. And the third is the consequences is governor interprets this silence as permission for indefinite inaction and creates a pocket veto. So as we all know, like the government is appointed by the union. So sometimes if there is a conflict between the state and the union, and when there is a different government at center and state, then this issue emerges frequently. And we have seen that the Tamil Nadu, Kerala, Punjab, these are having the different government than that of the central government. So this issue has become prolonged. Now the crisis is the Tamil Nadu and Kerala to delay legislative indefinitely. So see, there is a state government and they have constitutional backing, and if you are delaying this giving assent to the bill for so long, then the actual mandate by the people that will get diluted. So the actual काम था स्टेट गवर्नमेंट का वो नहीं कर पाएंगे, उनको पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पॉलिसी पैरालिसिस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से चलना चाहिए था वो नहीं चल पाएगा. So to avoid this issue, they have gone to the court. Now we'll see the questions that they have asked, the 14th questions that they have asked. So we have divided into 3 sections. That is the discretion. First is the discretion, second is the judiciability, and third is the timeline. So is the governor bound by aid and advice when granting assent? He said yes, it is bound by aid and advice. So if the legislative council gives advice, then it is bounded to the governor to give assent. And second is the governor's silence subject to judicial review, and can court touch article 200 and 201 power? And the third is, can the judiciary intervene deadline where the text is silent is deemed assent valid? So these were the major 3 themes. So we'll see one by one. So first one, it is the rejection of deemed assent. So automatic law, what it says, the ruling, the court struck down the deemed assent as an alien to the constitution. What court says कि deemed assent जो है as an alien to the constitution है, so उसको struck down कर दिया. Reason क्या था कि assent must be active constitutional act and not a passive constituence of silence. ठीक है, जो एक्ट होना, assent जो होना चाहिए था वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होना चाहिए, ना कि पैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस होना चाहिए. जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है? कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 142 के तहत वो रीराइट नहीं कर सकता है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंसर्ट कर सकता है यस वेयर देयर इज नो डिसीजन. तो जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको रीराइट नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142. ये था. दूसरा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड मैंडेमस. सो द मैंडेमस क्या होता है कि इट इज कोर्ट इश्यूज डायरेक्शन सो दैट जो आपकी ड्यूटी है वो आपको फुलफिल करना है. तो दो न्यू रूल्स ये है कि इंडेफिनिट इनएक्शन जो है, इंडेफिनिट इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल दो रिजिड डेडलाइंस कैन नॉट बी सेट. तो बोला कि इंडेफिनिट इनएक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, मानते हैं कि जो रिजिड डेडलाइन जो 60 डे का फिक्स किया हुआ वो सेट नहीं किया सकता है. और रेमेडी क्या है कि जो देयर इज अ लिमिटेड मैंडेमस, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप फिक्स नहीं कर सकते हैं टाइमलाइन गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए. एंड डेफिनेशन, जो इसका डेफिनेशन ये है कि कोर्ट कैन ऑर्डर अ गवर्नर टू टेक डिसीजन, असेंट, विथहोल्ड, रिटर्न और रिजर्व, बट कैन नॉट टेल देम विच डिसीजन टू टेक. उन्हें ये नहीं बता सकते हैं कि आपको क्या विथहोल्ड करना है, असेंट देना है, रिटर्न करना है, रिजर्व करना है, आप ये नहीं बता सकते उनको. ठीक है ना. And there is a logic behind this also, that is the pocket veto जो है cannot be used
टू स्टॉल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंडेफिनिटली। ठीक है, तो आपका पास जो पॉकेट वीटो है गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास, उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड इज बाइंडिंग नेचर, एडवाइस और लॉ। ठीक है, तो एडवाइस और लॉ ये है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, क्या वो बाइंडिंग है और नहीं है। तो हम जानते हैं कि वो एडवाइजरी नेचर का है। जो अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया है वो एडवाइजरी नेचर का है अंडर आर्टिकल 143 1 क्लॉज में। ठीक है, बाइंडिंग प्रेसिडेंस नहीं है इसका। सो डिफैक्टो लॉ जो है वो है नहीं है। सुनो तो लॉ अंडर आर्टिकल 141 क्या कहता है कि एडवाइजरी ओपिनियंस आर टेक्निकली नॉट जजमेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है टेक्निकली जजमेंट नहीं होता है, लेकिन इस केस में ये जजमेंट है बिकॉज यू हायर बेंच बैठा था और हायर बेंच ने रिकमेंडेशन दिया है। तो उस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो बोले कि ये जो है वो ओरिजिनल जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर सकता है। ठीक है, द प्रेसिडेंस वाज कि एक सेंट जेवियर्स कॉलेज केस हुआ था 1974 में, वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था कि दीज ओपिनियंस कैरी इमेंस परसुएसिव वैल्यू। तो जो ये रेफरेंस है और जो ओपिनियन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो इमेंस वैल्यू करता है, क्या परसुएसिव वैल्यू करता है। ठीक है, द रियलिटी इज treated as authority to avoid future litigation. It is soft law with hard consequences. तो ये इसको ट्रीट किया जाता है कि जो सॉफ्ट लॉ है with hard consequences। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रेफरेंस दिया है तो उसका एक हार्ड कॉन्सिक्वेंसेस होता है। Now we'll see the comparative insights 2012 versus 2025। तो 2012 में क्या हुआ था, जो नेचुरल रिसोर्सेज रेफरेंस था जो हमने देखा था ऑलरेडी पहले, उसमें क्वेश्चन क्या था कि इज ऑक्शन मैंडेटरी। तो रूलिंग आया था कि नो लीगल स्ट्रेट जैकेट ऑन पॉलिसी। ठीक है, नो लीगल स्ट्रेट जैकेट ऑन पॉलिसी। 2025 में क्या हुआ कि एसेंट डिफरेंस जो था कि आर टाइमलाइंस मैंडेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो लीगल स्ट्रेट जैकेट ऑन टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम चेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 142। तो इसका टेक अवे क्या है कि द कोर्ट कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट्स एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी while enforcing constitutional spirit। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को इन्फोर्स करने के लिए कंसिस्टेंटली प्रोटेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी कि देयर शुड बी एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। सो द पहला वे फॉरवर्ड है कि देयर शुड बी कोडिफिकेशन। लाइक व्हाट डज इट मीन बाय कोडिफिकेशन। तो यूनियन गवर्नमेंट शुड इशू इंस्ट्रूमेंट्स of instruction for governor, like how he should do, in which case they should use withdrawal, withhold, they can return, give assent, कब किस किस में कैसे करते हैं। दूसरा है कंसल्टेशन, लाइक कि स्टेट शुड कंसल्ट विद द सेंटर बिफोर पासिंग अ कंटेंशियस लॉ। अगर कोई कंटेंशियस लॉ है तो उसको पास करने से पहले यूनियन से कंसल्ट करना चाहिए किसको, स्टेट को। एंड द थर्ड इज कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। एंड व्हाट डज इट मीन? The reason must be given by the withholding assent. If you have withholded the assent, you should give the reason. And it has been also mentioned there in the Sarkaria Commission, Punchi Commission, and the NCRWC. Even the MHA guidelines also. There was a MHA guidelines which said कि तो governor should give assent within a given period of time. Even this Punchi Commission, Sarkaria Commission, they have mentioned 6 months as maximum period to give assent. So now coming to the conclusion, the spirit of constitutionalism, that by rejecting deemed assent yet upholding, the Supreme Court has rejected the deemed assent and upholded the limited mandamus. The court struck the balance, protecting the governor's dignity while ensuring the legislatures will be respected. So the court tried to balance between the legislature and executive. ठीक है। And the final thing is the silence of the constitutional are not void to be exploited but spaces for federal trust. So
there should be federal trust and doctrine of, there should be a doctrine of subsidiarity. मीन्स यू शुड प्रोटेक्ट द फेडरलिज्म, एट द सेम टाइम जो जिसके डोमेन में है उसको वो काम करना चाहिए, उसको काम करने देना चाहिए. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस lecture, and I hope you found this presidential reference information very useful. So do like, share and subscribe our channel so that you can get such updates on any topic which is of public importance. So with this I would like to thank you all for being the part of this means master family. Thank you very much.